Morning everyone and welcome to BYJU'S exam prep. My name is Alpa Sharma and this is our weekly editorial analysis, and I'm really happy to see all of you guys back after one long week. Am I clearly audible and visible? Good morning Stuti, Ashi. Very good morning you guys are my loyal kids. One of the first few kids to come early into the class. Hi Arya. Yes dear. Thank you so much for confirming. Everyone for bearing with me. Thank you everyone. Okay, so a lot of people have been saying sometimes आप लोगों को problem होती है understanding what the main idea is, what the main argument is when you solve a critical reasoning passage. So first article हम ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि उसमें main idea अब तो audible है. Audible है ना guys? Yeah, okay. Tanay, I'll first answer Tanay's question before I proceed with the agenda of the class. Tanay, 15 days जो निकल गए उसको भूल जाओ. Forget it. That's for everyone else जिनके साथ issues है कि examination था आपसे miss हो गया. If you have missed out on some 15 days, 10 days, उसको भूल जाओ. And start from where you have left. कुछ भी नहीं होगा. जीके जो मिस कर दिए उसको इग्नाइट से कवर अप कर लो. Okay? Just continue. मैम क्लैट के सैंपल पेपर में इंग्लिश सेक्शन में देयर आर ग्रामर क्वेश्चंस टू, सो वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट. यस भावना, आप लोगों को याद होगा मैंने ना कंटिन्यूअसली थ्रू आउट क्लासेस आप लोगों को बोला है कि ग्रामर आ सकती है, पैराजिम्बल्स आ सकते हैं, डायरेक्ट वोकैबुलरी आ सकता है. कंसोर्शियम पे कभी ट्रस्ट नहीं करना, मैंने ये 12 साल में सीख लिया क्लैट के लिए पढ़ाते हुए. आई विल रिपीट द सेम टू यू. सब कुछ करके जाना है आपको, सब कुछ. एनालिटिकल भी करके जाना, मैथ्स भी करके जाना है, सब कुछ करके जाना. हो सकता है एलेट में भी आ जाए, हो सकता है क्लैट में भी आ जाए. यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग. इमेजिन ग्रामर कितने दिन लेगा, एक हफ्ते की मेहनत है ग्रामर, और आपके ग्रामर क्वेश्चन सही हो जाएंगे. कुछ 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने एंड यू विल बी अ मास्टर ऑफ ग्रामर. इतना सा एफर्ट, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 1 मार्क आपकी जेब में होगा और सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है. सो एवरीवन प्लीज बी वेरी थ्रू विद सच सिंपल क्वेश्चन. ये कितनी जिफी में हो जाते हैं. और अगर ग्रामर आएगा ना, मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि आप ग्रामर क्वेश्चन पहले सॉल्व करें. क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेते हैं. आरसी पढ़ने में 1 मार्क के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. ग्रामर के लिए आपको विद इन 20 सेकेंड आंसर मिल जाएगा. नहीं छोड़ना है ग्रामर, नहीं छोड़ना है फिगर ऑफ स्पीच, नहीं छोड़ना है आपको पैराजिम्बल्स, वोकैबुलरी क्वेश्चंस. उनको प्रैक्टिस करिए. ठीक है? आई होप दैट मेक्स सेंस. Yes, Debadrita. In fact, the entire paper, and I'm glad they had released a paper because कुछ भी आ सकता है. कंसोर्शियम उन्होंने रिमाइंड कर दिया आपको. वापस आते हैं अब एजेंडा क्या है क्लास का उस पे. गाइज एक सेकंड बच्चे, समथिंग्स रॉन्ग. प्लीज गिव मी अ सेकंड. आई एम राइट हियर. आई हैव टू जस्ट अ मिनट. नाउ एवरीथिंग लुक्स फाइन. चलो ठीक है, आज का एजेंडा देखते हैं. एजेंडा क्या है? 2 पैसेजेस करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे उनको. उसमें मेन आइडिया ढूंढेंगे, मेन आइडिया क्या है, उसमें इन्फरेंसेस निकालने का ट्राई करेंगे. ठीक है? और वोकैबुलरी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट कुछ वर्ड्स हैं जिस पे पूरा मेन आइडिया डिपेंड करता है. तो वो न्यू वोकैबुलरी लर्न करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे इन्फरेंसेस ड्रॉ करेंगे. टोन और मेन आइडिया तो हम बहुत सालों से करते आ ही रहे. अच्छा, बिफोर आई शो यू, एक और चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है, और वो ये चीज है कि डू यू रिमेंबर, अगर आप मेरे साथ पिछले 1 साल से हैं एसोसिएटेड, 2022 के एग्जामिनेशन से पहले I had conducted a few sessions on the most important articles that you have to read from the editorials. और काफी सारे आर्टिकल्स पैसेजेस बन के एग्जाम में आए भी थे. याद है आप लोगों को? इंटरनेशनल लॉस पे आया था, कोविड पे आया था. आप लोगों को याद है वो आर्टिकल्स? If you've been associated with me. This year again, since CLAT is around the corner, this year I, along with my team, will be releasing a PDF for you. Okay, that's going to be available on our app. जहां most important articles जो last 6 months में appear हुए हैं newspapers में, वो मैं आपको PDF में I'll give it to you with a gist under the article कि इस आर्टिकल को आपको कैसे पढ़ना है, इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्या सिखाएगा. So even if the exact passage does not come up in the examination, आपको उस पैसेज को किस तरीके से पढ़ना है, किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, ये आपको हर पैसेज के नीचे I'll write a summary and I'll tell you. So that should be released by
मिड नवंबर, ठीक है, बाय 15th of November दैट डॉक्यूमेंट शुड बी रिलीज्ड. उसको पढ़ लेना ध्यान से, उसके सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना. वी आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बिफोर क्रिएटिंग दैट आर्टिकल, सो जब भी वो रिलीज होता है आई विल लेट यू नो. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर टेस्ट सीरीज. तो अभी तक नहीं परचेज किया तो कर लो जल्दी से, क्योंकि I can proudly say our tests are pretty close to what comes in the actual examination, and they aren't a cakewalk for sure. So we're really proud of what we have created here. Make sure you go enroll yourself for this course as soon as possible. Here is our first passage and the first page. मैं आपको नहीं बताऊंगी इसका टाइटल क्या है. विनायक, it will be available on our app. Okay? So पढ़ो इसको और मुझे वो लाइन पॉइंट आउट करके बताओ जो आपके अकॉर्डिंग इस पूरे पेज का आर्ग्यूमेंट है. वो लाइन पॉइंट आउट करके बताओ. ऑल द बेस्ट एवरीवन. मूविंग माय टॉर्सो अ लिटिल. Hi Suraj, read the article. Second last line. Okay. We told them that this was invented 15 years before or after they were born. So ये premise नहीं है बच्चे. Diya, correct. Last, second and third line. We use that to our advantage. बच्चे ये aerogel, is it not a part of the premise? ध्यान से सोच के बताओ. स्तुति एंड नैंशी, एरोजेल तो एक एग्जाम्पल है, एक क्लेम समझाने के लिए. एरोजेल के बारे में जो भी लाइंस है. डिड यू रीड दिस? यस, इट्स फ्रॉम द सेम सोर्स. मुस्कान. Yes, Ashi, the first paragraph, last two lines. That's, yes, Arya, that's my argument. तो सबसे पहले मुझे बताओ, what is status quo? आप सब LLB स्टूडेंट्स होने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए. ये इतना कॉमनली यूज्ड वर्ड है विथ योर लीगल पैसेजेस. फर्स्ट पैरा थर्ड लाइन, फर्स्ट पैरा फोर्थ लाइन. यस, फर्स्ट पैरा के लास्ट 2-3 लाइंस इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. व्हाट इज स्टेटस क्वो? Simple. Status quo means the existing state of affairs. Existing state of affairs का मतलब क्या हुआ? अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट स्टेट क्या है. एग्जैक्टली स्तुति, दैट्स व्हाट स्टेटस क्वो इज. और इसके बारे में ऑथर ने ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम किया है. स्टेटस क्वो को उन्होंने लिंक किया है टेक्नोलॉजी के साथ. ठीक है. और उन्होंने ये बोला है कि टेक्नोलॉजी अगर हमारे बर्थ से पहले की है तो उसको हम ट्रस्ट करेंगे. People tend to have a more positive evaluation of that technology that came into existence before you were born. But आपके born होने के बाद अगर कोई टेक्नोलॉजी आई, so basically ये डिपेंड करता है आपकी एग्जिस्टेंस से कितना डिस्टेंस रखती है टेक्नोलॉजी. अगर बहुत साल पहले आ गई तो उसको आप ट्रस्ट करोगे, लेकिन बहुत रीसेंट टाइम में आई है आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे. यू हैव अ पर्सनल बायस टुवर्ड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. They don't really know
a world where it didn't exist. उनको पता ही नहीं है कि मेरे बर्थ से पहले क्या वर्ल्ड था, तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो कोई ओपिनियन बना ही नहीं पाते उसके बारे में, तो वो पॉजिटिवली सोचते हैं. अब मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्योंकि लोग अपने बर्थ से पहले आने वाली टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली देखते हैं, क्या रीजन है कि वो ऐसा करते हैं? सोच के बताओ, पैसेज में तो नहीं लिखा हुआ, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन. इफ अ टेक्नोलॉजी केम इन बिफोर यू वर born, why would somebody trust that technology and not the one that came after you were born? Why are people more skeptical? Skeptical means doubtful. Skeptical एक tone भी हो सकता है, FYI. Why are people skeptical about the technology that came into existence after they were born? सोचो, logic लगाने का try करो. Let's anticipate what the passage could talk about. One, of course, Arya, because they did not know the world before they were born. उस world में क्या था उनको नहीं पता. Exactly, आशी. Also, देखो, एक तो एविडेंस नहीं है और दूसरा उनके मन में ना ये अजम्पशन है. अजम्पशन जो आशी ने लिखा है, ये अजम्पशन है प्रॉबेबली, अभी तक पैसेज में ये नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, पैसेज में सिर्फ इतना लिखा है बिकॉज देयर वाज अ वर्ल्ड दे डिड नॉट नो ऑफ, क्योंकि उनको वो वर्ल्ड नहीं पता था, तो वो उसको पॉजिटिवली ही देख रहे हैं क्योंकि वो तब से लेके आज तक एग्जिस्टेंस में है एंड पीपल उसको यूज कर रहे हैं एंड वो उनको ये अजम्पशन देता है दैट दिस इज गोइंग टू टर्न आउट गुड. लोगों को कोई हार्म नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ फोन्स का. फोन्स, नॉट मोबाइल फोन्स बट फोन्स existed from even before you were born. तो when you were born already आपने लोगों को वो यूज करते देखा, तो आपको लगा कि अच्छा लोग यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको, तो ये चीज सेफ होगी, मैं इस टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट कर सकता हूं. इसलिए उनका कोई गेस करते नहीं. दे डोंट हैव एनी पर्सनल बायस अबाउट दैट वर्ल्ड जो उनके बर्थ से पहले एग्जिस्ट करता था, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उस वर्ल्ड के बारे में. और क्योंकि लोग यूज करते आ रहे हैं, इट मस्ट बी फाइन. लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके डिमेरिट्स हम आज अपने सामने देख रहे हैं. वी कैन फ्रेम एन ओपिनियन अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. सो जितना कम टाइम होगा मेरे बर्थ से उस टेक्नोलॉजी का, उतना ज्यादा स्केप्टिकल मैं होंगी अबाउट दैट टेक्नोलॉजी. करेक्ट इन्फरेंस एवरीवन? करेक्ट? अग्रीड? यस, यस विनायक. Agreed? Okay, chalo. Let's continue with the next page. Read this and send me a done. There are many sabzi vendors crossing my house at this time. आ रहा है background में noise. I don't know what he's selling. Possibly potatoes. And I can't even get rid of them. Ma'am, are these important articles for CLAT? Oh yes. बिल्कुल कृतिका, yes. बोथ क्लैट में भी आ सकता है और ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है. I mean, मैं क्लैट का पेपर नहीं बनाऊंगी, बट मैं सिर्फ assumption पे आर्टिकल्स चूज करती हूँ, बट दे विल ऑफ कोर्स एड योर अंडरस्टैंडिंग. Yes, this whole page is just supporting the main argument again. A study was conducted. जैसे ही देखो, ये बात याद रखना,
अगर ऑथर ने क्लेम किया है जिसको सब्सटैंशिएट किया है स्टडी के साथ, आप उस स्टडी को कंप्लीटली मिस कर सकते हो, आपको वो स्टडी पढ़ने की नीड नहीं है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द क्लेम द स्टडी इज मेयरली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट, सो यू कैन गिव दिस अ मिस. Now this page has an again a furthermore explanation, but a very good line that you guys can have a laugh over. फोन, स्मार्टफोन्स, उसके आंखें खराब हो जाती है, उससे सर में दर्द हो जाता है, ऑफ कोर्स होता है, बट इसके ज्यादा एडवोकेट मतलब इसका ज्यादा अगेंस्ट कौन है? ओल्डर पीपल, मे बी योर ग्रैंड डैड, मे बी योर ग्रैनी मस्ट बी क्रिटिसाइजिंग एवरी टाइम यू मस्ट बी यूजिंग योर फोन. योर पेरेंट्स मे ऑल्सो बी डूइंग दैट बिकॉज ये उनके बर्थ के बाद आया, सो दे मोर स्केप्टिकल अबाउट दैट. अगर आप लैंडलाइन में बात करोगे, दे विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम. अगर आप पुराने टाइप का टीवी देखोगे, they will not have so much of a problem, but using phones, screens, that is something they will have a problem with. It's completely a justification of the entire theory given by the author कि कैसे, yeah, old people, exactly, that कैसे जितना डिस्टेंस आपके बर्थ के बाद अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है, you will be more biased towards that in terms of criticism. You will not like it, okay? So or you'll be skeptical about that. So smartphone is an explanation for that. Let's move to the next page. Read this and send me a done. देखो एक सिंपल चार्ट से समझते हैं इसको. भावना, we will. Yes, Katyayani, absolutely correct. सेम आर्ग्यूमेंट. चलो ये आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा एक्सट्रपोलेट करते हैं यहां. दिस इज व्हेन यू वर बॉर्न. जितना दूर जाते जाओगे बर्थ के बाद की टेक्नोलॉजी में, उतना आपका डाउट इंक्रीज होता जाएगा. जितना दूर जाते जाओगे बिफोर योर बर्थ, उतना आपका डाउट कम होता जाएगा. हियर लेस डाउट, हियर मोर डाउट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरी ग्रैनी को दिखा दिया कि मैं मेरे बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलने देती, फॉर एग्जाम्पल, दैट्स नॉट ट्रू अबाउट माई चाइल्ड, मिट्टी में नहीं खेलने देती. नो, अनदर एग्जाम्पल, I have bought some online e-kit for learning for my daughter. My granny will be skeptical about that. बोले e-kit बच्चे के लर्न करने के लिए, बच्चा अपने आप सीख जाता है. You don't have to. Or buy a high chair for my child to sit and eat. बच्चा हाई चेयर पे कौन बिठाता है, बच्चा अपने आप खाता है. That's what my granny used to tell me. जितना दूर होते जाएगा ना उनसे, उनके बर्थ के जितना बाद आएगी टेक्नोलॉजी, वो उतना स्केप्टिकल होंगे. और जितना पहले चले जाते जाएंगे, आपकी मम्मा आपकी ग्रानी की चीजें कोट करती होंगी, उनको ट्रस्ट करती होंगी. आपकी ग्रानी उनकी ग्रानी की चीजें कोट करती होंगी, उनको ट्रस्ट करती होंगी. जितना बैक जाएंगे आप फादर अवे इन द हिस्ट्री, द ट्रस्ट बिकम्स हायर. Everyone, okay guys, see, I've been getting a lot of questions on the CLAT sample paper released. FYI, we are going to be conducting a session on ग्रैंडमदर को ग्रैनी बोलते हैं, ओके? तो मैं दादी माँ की बात कर रही हूँ इधर, उनको ग्रैनी बोलते हैं, ओके? चलो back to it. Everyone who's been asking questions about our CLAT sample paper analysis and what's our suggestion on that, we're going to have sessions on individual sections. When is that going to happen? Very likely in the coming week. पूरा पेपर का एनालिसिस देंगे आपको हम, आंसर कीज बताएंगे, उस पेपर को कैसे एड्रेस करना है, हैंडल करना है, उससे क्या टेक होम है, सब कुछ बताएंगे. We'll have a session within the coming week. So उसके लिए एक तो you have to be very regular with our YouTube channel and subscribe to it if you haven't done that yet. मैम ने कहीं भी प्रमोशन चिपका दिया, ठीक है? सो नेक्स्ट वीक ये होने वाला है, ओके?
So ultimately this is what the argument is. ये सबको आ गया ग्राफ समझ में कि जितना फार्दर जाएंगे हिस्ट्री में उतना ट्रस्ट होगा, जितना फार्दर जाएंगे फ्यूचर में या आपके बर्थ के बाद उतना स्केप्टिसिज्म डाउट इंक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट पेज एवरीवन. Last page for this passage. Read and send me an. Bhavna, we would in that session, we would tell you the strategy. अच्छा एक मिनट इसके पहले no, here you go. Read this page everyone. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जैक्टली स्तुति, परफेक्ट एग्जाम्पल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑथर ने अपनी लाइफ का ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, किस चीज को हिंट कर रहा ऑथर? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है. मतलब जब वो छोटा था, ही यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी और उसको कोई डाउट नहीं था उस चीज से क्योंकि वो उसके बर्थ से पहले इन्वेंटेड था. बट अब नाउ ही इज ग्रोन अप, वो चीज और ओल्डर हो गई है टीवी, उसका तो ट्रस्ट बढ़ना चाहिए ना टीवी के ऊपर. यहाँ डाउट कैसे आ गया है कि अगर मैं उसकी जगह पियानो प्ले करता तो आज कुछ और होता मेरा लाइफ. Why is this example given? What is he trying to claim here? कौन बताएगा क्यों दिया ये एग्जाम्पल? Anyone? Nobody? Think. Okay. The last line. Exactly, Muskan. Correct. Overweighing the past things. It hinders opinions. You should not overweigh the value of the past things. नहीं तो नया इनोवेशन कैसे होगा? उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने ये अपना टीवी का एग्जाम्पल दिया. Not to over rely on the past. Yes, Nerulus. Correct. So, past का इन्वेंशन है, बट आप अगर ओवर रिलाई करोगे तो कभी भी नई चीज से नहीं सीख पाओगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही सेज ओवर रिलाइंग मैंने नहीं किया. मैं अगर ओवर रिलाई कर रहा तो मैंने पियानो नहीं सीखा. अगर मैं शायद पियानो सीख लेता तो आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन. Exactly. We have to trust the modern technology as well. Yes, Katyayani. We have to move away from over-reliance on the past technologies. So it's a suggestion given by the author towards the end. Next question मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे ये बताओ. This over-reliance thing, overweighing on past technology, will this be a part of your main idea if I ask you what the main idea is? Will this be a part of your main idea? Yes, Debajrita, correct. Absolutely, yes. Bilkul correct. This will be a part of your main idea. It's a suggestion as a conclusion given by the author towards the end. So your main idea would be basically the first page
This is the first page. No, here. Yes, the first page, and then it's going to be the last paragraph. That is, people trust technology that came before their birth, and they are skeptical about the technology that came after their birth. And then there's a suggestion, but the author also suggests that overweighing on the technology that came before your birth is wrong. So it's a combination of these two that will make the main idea. तो इससे क्या चीज सीखी? जब पैसेज पढ़ते हैं ना तो फर्स्ट और द लास्ट पैराग्राफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज वो आपको मेन आइडिया निकालने में बहुत हेल्प करते हैं. ओके, भावना, here the main idea will be a combination of the first paragraph and the last one because first is an intro ना, तो वो एक detailed main idea हो जाता है. So first passage is done and we have time. Would you like to do the second passage, everyone? Shorter than this, certainly. Neuralist, it's always a combination. Neuralist, ऐसे समझ के देखो. See, if I have two options, everyone be very attentive here. If I have two options of the main idea, one that says main idea is overweighing on the value of the past technologies is wrong, and the second one that says people trust the technology that came before their birth and are skeptical about the technology that came after their birth, but overweighing the past technology is a wrong idea. Needless, which one would you choose? You'll always choose the second one because we always look for the bigger picture, one option that encompasses everything. So the second one will be your correct main idea. So again, what's, yes, Ashi, the second one is the main idea. Okay? Yes, correct. Now let's move to the second article, everyone. Second wala padhte hain. Here you go. Oh, by the way, we have our All India Open Mock CLAT 23 Mock 2 happening starting October 21st, ending October 31st. दिवाली वीकेंड, दिवाली वीक, स्कूल की छुट्टी, एक दिन बैठो 2 घंटा मॉक दो, अच्छे से देखो वेयर डू यू स्टैंड, राइट. बहुत जरूरी है आपके लिए मॉक देना. अभी मॉक नहीं दोगे तो कब दोगे? यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट. बहुत सिंसियरली ये मॉक देना एंड आई विल सजेस्ट यू अगेन, मॉक देने से पहले मेक अ स्ट्रेटजी इन योर हेड हाउ यू गोइंग टू टेक द मॉक, which is going to be the first section you will start with, which section would be taken in the end, how much time would you give to each section. And now that we know CLAT has thrown up some unexpected questions to us in the sample paper, your mocks can also have them. So always take out 2 minutes in the beginning to skim through the paper if there's something new that has come up or not. If something new has come up, strategize your paper on that moment accordingly. That's my suggestion before you take this mock. Let's have a look at the next passage. Read the page and send me a run. Yeah, I'll tell you. Let's first do this one. Sijan, for this passage, it is correct. Analytical is the tone, Muskan, for the previous one. Correct. Okay. Did you practice skimming in this page? If you didn't, you have to learn that art. After the highlighted line, everything could have been skimmed. Random एक word पढ़ना और समझना कि अच्छा ये वही claim है जो author समझाना चाह रहा है. I hope you have skimmed. I hope you know how to skim.
Skimming, yes. In fact, it could be skipped as well. Yes, both the articles are research based. So there's a claim if the most popular legally available drug, that's coffee, does it tweak your senses and make you buy more? Probably not expensive, but certainly higher number of items. That was proven by this study. Okay, so this is something we need to pay attention to because this page can lead to a lot of factual questions. Not expensive, but more items. And only those people who drank caffeinated coffee, not the decaf ones. Because that drug played some role in their minds and then they were so exuberant, so elated that they just went out and bought so many things. आपके साथ हुआ है ना कभी? मेरे साथ बहुत times हुआ है. Okay, so मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि when you're in a very happy mood you just tend to overspend unnecessarily. नहीं मतलब है तो भी खरीद ली चीजें. So that's the claim. Next page देखो. Read this and send me done. Exactly, Stuti. I have an important question here. What's the hedonistic product? What is this term? What are they buying? What are hedonistic products? The author claims they're buying more of hedonistic products, not notepads or folders or work-related stuff, but more hedonistic ones. What are these hedonistic products? Yes, Katyani, correct. Yes, yes, Neerulus. The products that are for fun, like toys. Yes, correct. Absolutely. Pleasure, enjoyment. That's hedonism. Hedonism is living only for your own pleasure, for your own enjoyment, and nobody else's. So hedonistic products are those products that give you pleasure, enjoyment. Use utility कुछ नहीं है उनका. Zero utility, but enjoyment top notch. So these are hedonistic products. And of course, there's another example that the author quotes here. If you don't know what hedonism is, here you would understand what these are with this example. Not notepads or folders or pens or work related stuff, but more fun stuff. That fun stuff is hedonism, self pleasure, self happiness. That's hedonism. And then there's another example of how Target or other stores in multiple places, they have an entire coffee house. You can buy coffee, spend some more. Yeah, you don't require, but you want, Ashi. That's hedonism. Last page dekhte hain everyone. Here you go. Last page of the article. Read and send me a done. Acha, tone of the author in this last paragraph. ये कौन बताएगा?
tone of the author in the last paragraph, the page that you see here. This is a little tricky. So I would like to talk to you about this one. क्या है tone बता दो. Oh, of course you can, Diya, but ऐसा नहीं हो you run out for shopping. Cautious हो सकता है, discursive हो सकता है क्या, ये बताओ मुझे सोच के. Can the tone be discursive? Sijan? Warning, suggestive. Discursive हो सकता है क्या? चलो ऐसा करते हैं, let's keep this as a homework. कल बताऊंगी इस लास्ट पेज का आंसर. डिस्कर्सिव टोन डिस्कर्सिव हो सकता है कि नहीं. I'll address this answer tomorrow in tomorrow's session at 11 AM. ठीक है, तो we'll think डिस्कर्सिव क्या है, यहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं, कल बताऊंगी. For now, main idea simple था. Higher caffeine in your body will make you shop more of hedonistic products. Simple as that. This is our plan for CLAT Crash Course 23. इसका screenshot ले लो. Make sure I look good in that. And then this is the plan for ALET 23 के series का schedule. So have a look at this as well. Okay, that is all for today. Make sure you've liked the session. If you haven't done that yet, follow us on YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, and download our app on Google Play. Aeon कल बताऊंगी सिजान, कल. Okay? Aeon और Nautilus दोनों से बताऊंगी. ठीक है, because कल last day होगा ना क्लास का, कल बताऊंगी. ठीक है? Thank you so much everyone. See you tomorrow 11 AM. Be on time. Bye everyone.